Right. Okay. Now let's move to the plant cell. Now there are a few differences in plant cell and animal cell. Apart from those differences, all of the things which are there in plant cell, they are the same as the ones which are present in animal cell. Okay, so you know them already. ओके सबसे पहले तो आती है चीज सेल मेम्ब्रेन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन is the same in animal cell and in plant cell. Then cytoplasm is the same in an animal cell and a plant cell. Then the internal structures, for example, mitochondria, it's the same. It is the powerhouse of a cell in an animal cell. It's also the powerhouse in a plant cell. Respiration takes place basically in the mitochondria. Then Golgi apparatus or Golgi bodies, their function is modification of proteins and it has the same function in plant cell and in animal cell and it's present in both. ये भी दोनों में present है. Then it has a plant cell and animal cell. They both have a nucleus. In both of them, the basic function of nucleus is that it controls all the cellular activity. Then in animal cell, I'm just talking about the similarities right now. I am not going to the differences. Then in plant cell, again you have endoplasmic reticulum, you have a smooth endoplasmic reticulum which does not have ribosomes attached to its surface, and its function is also the same. And then you have rough endoplasmic reticulum. It contains ribosomes which are attached to its surface, and its function is to produce and transport proteins. Okay, these are all the things which are present in an animal cell and they're also present in plant cell. Even the lysosomes, they are present in animal cell and they are present in plant cells. Okay? In some plant cells. It's not necessary that lysosomes will be present in all the plant cells. Lysosomes will be present in only those plant cells where they are required. Now, the things which are extra over here, there are a few things which are present in a plant cell, but they are not present in an animal cell. Does can anyone point those things out? Ma'am, cell wall, Right, a cell large, wall. cen- a large central vacuole, Yes, cytoplasm. chloroplast. Okay, these are three things which are present in and the starch grains. They are as well present in a plant cell, but not present in an animal cell. Okay, so let's talk about the cell wall. In spite of the cell membrane being present, there is a cell wall present in a plant cell. Why? Because in plants, basically the system of plants, it runs on excessive utilization of water. ठीक है अब वी बीइंग ह्यूमंस हमें पता होता है हमने कब पानी पीना है ठीक है हमें प्यास लगती है वी गेट थर्स्टी एंड वी देन ड्रिंक वाटर लेकिन एक प्लांट को ये नहीं पता होता कि उसने पानी कब एब्जॉर्ब करना है कितना एब्जॉर्ब करना है ठीक है बिकॉज उसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज्यादा
एडवांस नहीं है जितना ह्यूमन बींग्स का है. दैट इज व्हाई इट इज अ प्लांट. दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ने उनके हर सेल के साथ एक प्रोटेक्टिव कोट, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखी है, ताकि अगर इन केस प्लांट एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके सेल्स बर्स्ट ना करें. ठीक है, अगर हम ह्यूमंस एक्सेसिव वाटर कंज्यूम करेंगे ना, तो हमारे सेल्स जो हैं वो बर्स्ट कर जाएंगे. ठीक है, सेल बर्स्ट कर जाता है बेसिकली, बिकॉज इट हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, जस्ट लाइक अ बलून. बैलून के अंदर आप हवा भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, इट विल बी filled up to a point. After that point, it's going to burst. यही केस होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ. सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक लिमिट होती है इसकी, till which it can withhold the pressure of fluids inside the cell. ठीक है, लेकिन cell wall is basically a wall which uh, can withhold that pressure. ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन को उससे एक एक प्रॉपर बाउंड्री से एक्सीड नहीं करने देते. तो इन केस अगर कभी सेल बड़ा भी हो जाता है, या फिर अगर कभी स्वेल भी कर जाता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, तो ये इट डजंट बर्स्ट. एक तो ये फंक्शन है सेल वॉल का, और इसका यही फंक्शन होता है कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, उसे शेप प्रोवाइड करती है, उसको बर्स्ट नहीं होने देती. प्लांट सेल. इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Then next you have large central vacuole. Now in animal cells, the vacuoles were small inside the cells. There were small vacuoles, but in plant cell ये large central vacuole है. अब ये जो large central vacuole है, इसका एक function नहीं है, इसके बहुत सारे functions हैं. ठीक है, sometimes it also acts as garbage collector. ठीक है, it also stores the sugars. It temporarily, it stores the proteins, it stores the sugars. It it is a storage organ for the plant. ठीक है, ये स्टोरेज के तौर पे भी काम करता है. जब अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाए प्लांट सेल के अंदर, तो ये अगर प्लांट सेल के अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसी में ही जाते हैं, ये उन्हें भी डिसॉल्व कर देता है. दैट्स वाई यहाँ पे अलग से लाइसोसोम नहीं है. और यही वजह थी कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, कुछ प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते. ठीक है, तो जिसमें जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये एक्ट कर रहा होता है एज इन ऑल ऑफ दीज वेज. उनमें जरूरत नहीं होती लाइसोसोम्स की. ठीक है. Then amyloplasts or starch grains, these are basically just starch particles. ठीक है, starch particles हैं ये. जब excessive ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है सेल के अंदर, तो cell converts it into starch and stores inside itself in the form of a starch grain. उसके बाद ये कभी कभी इसको यूज भी कर लेता है. जब इसको जरूरत होती है सेल को, इट यूजेस द. आई एम सॉरी शैमा, आई फॉरगॉट टू सेंड यू अ रिक्वेस्ट. जी. सो आई वाज सेइंग, शैमा, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू सेंड यू अ रिक्वेस्ट पर्सनली. ओके.
अब आपने ज्वाइन कर लिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, so we were discussing about a plant cell, about its cell wall, that it withholds the pressure. Um, Starch grains are the starch or the glucose which is stored inside the plant. Then the लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट्स मेम्ब्रेन नेम इज टोनोप्लास्ट। TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। एंड इसके अंदर होता है सेल सैप। ठीक है, शुगरी सब्सटेंस, सेल सैप। ऑलराइट, then the most important thing is the chloroplast in a plant cell, जो basically differentiate करता है plant और animals को. That is the chloroplast. Chloroplast is the organ of the plant cell where photosynthesis is taking place, where the process of photosynthesis is taking place, where glucose is being produced by the plant. Okay, that's being produced inside the chloroplast. So let's dig into more details. Okay, so we have read about the structure, internal structures. I have told you about what's inside the cytoplasm. I've told you about what's inside the lysosomes. Now the central vacuole in plant cells. यहाँ पे भी अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है that chloroplasts are in plant cells only, and these are sites where plants make their own food. In a plant cell, usually it has a large central vacuole which contains a liquid called cell sap. Now, cell sap contains dissolved substances such as sugars, amino acids, and mineral salts. And this large vacuole is enclosed by a membrane called tonoplast. Okay, all other functions are the same. Okay, centrioles. Then centrioles, they are basically they play a part in cellular division, and they are absent in plant cells because they are not required by the plant cells actually. Okay, centrioles are also some organs which are organelles. Sorry, organelles which are present inside an animal cell, but they are not present in plant cells. Okay. Now, the central vacuole in a plant cell, these are membrane-bound storage sacs. They contain water, food, waste, and they make the cell firm by swelling and helps the plant cell maintain support and rigidity. So basically, plant cell के अंदर सबसे पहले जब water store होता है तो it is stored in the central vacuole, and then it uh, कभी प्लांट सेल में वाटर ज्यादा साइटोप्लाज्म में नहीं जाता. Bisma, you want to ask something? No, No, you raise your hand. no, I'm Okay, sorry. okay, all right. So um, now cell surface membrane. I've told you before that it is also known as plasma membrane. It has selective permeability, which means that it only allows some substances to pass through it, but not all. It doesn't allow every substance to pass through it, the cell surface membrane. Then plant cell wall. All plants they have cellulose cell wall. Now this is interesting.
The plant cell wall is created by प्रोटीन. ये बेसिकली एक प्रोटीन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है ये. दैट्स नोन एज सेल्यूलोज. ठीक है. बट अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये प्रोटीन है या अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, देन व्हाई डजंट इट डिसॉल्व? जबकि सेल के अंदर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या सेल के बाहर भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं. अब हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है. एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल, एक होते हैं जो हम स्टोर करते हैं और जो हम यूज करते हैं फॉर फूड पर्पसेस. ठीक है. जो हम फूड पर्पसेस यूज करते हैं, वी कैन ब्रेक दोज डाउन. बट जो स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं या जो प्लांट्स यूज करते हैं, हम वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. रीजन बीइंग कि हमारे पास उनके एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते. अब फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है, सेलुलोज सेलुलोज का जो एंजाइम है, दैट इज सेलुलेज. सेलुलेज ब्रेक्स डाउन सेलुलोज. वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. एनिमल्स में भी प्रेजेंट नहीं, वो सॉरी प्लांट्स में भी प्रेजेंट नहीं होता सेलुलेज. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर्स. गर्ल्स, आप समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yeah. Now it protects the cell from mechanical damage and helps the cell maintain its rigidity. अब बेटा मैंने आपके पास आना है. Girls, just a second, please. Who is Hajra Itizaz? Ma'am, she's a new And girl. she is a new. Okay. नहीं नहीं, मैं किसी को भेज दे. Okay, sorry Hajra, but yeah, I didn't know that you were new. बेटा बात यह है कि आजकल लॉकडाउन है.
Okay. So तो basically, how permeable are the cell wall? Sorry, I was um, bit busy, distracted, network problem. How permeable are the cell wall and cell membrane in a plant cell? Gee, now the difference lies over here between a cell wall and a cell membrane. In a cell wall, the cell wall is completely permeable. ठीक है ये वैसे एक क्वेश्चन है ठीक है इट्स अ क्वेश्चन कि कितनी permeable है cell wall. Now the word permeable means that how much of the cell wall allows substances to pass through it. ठीक है and how much of it doesn't allow the substances to pass through it. Now, cell wall is completely permeable and cell membrane is partially permeable. Can anyone tell me the meaning of this, please? What is the meaning of being fully permeable and what is the meaning of being partially permeable? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी बी. ठीक है बी आंसर इसका होगा लेकिन फुली परमिएबल और पार्शियल परमिएबल का मतलब क्या है आप लोग पहले मुझे प्लीज ये बताएं. जी गर्ल्स आई एम वेटिंग. हम ना प्लीज डोंट लीव द क्लास नाउ. बताओ क्या मतलब है फुली परमिएबल एंड पार्शियल परमिएबल का. आवाज आ रही है मेरी. Ma'am, in fully permeable, they let all the substances in, and in partially permeable, they let only certain substances in. Yes, in fully permeable all the substances are allowed to pass through and in partially permeable only few substances are allowed to pass through. Pass through what? Ma'am, the membrane. Yes, the membrane or the cell wall. ठीक है either the membrane or the cell wall. So if the cell wall is fully permeable, it means that it doesn't stop anything from moving into or out from the cell. ठीक है इट मीन्स कि वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रही मूवमेंट को. जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है I told you before that cell membrane controls the movement into and out of the cell. Okay? Cell membrane controls that movement. But cell wall doesn't control the movement. Cell wall का function ही नहीं होता movement control करना. Cell wall का function होता है सिर्फ rigidity, firmity provide करना to the plant cell ताकि plant cell burst ना हो. ठीक है? During water consumption. That is the function of a plant cell wall and cell membrane. Okay, now animal cells versus plant cells. This is the difference between an animal cell and a plant cell, and it's very important. An animal cell is at on the right side we have an animal cell, and on the left side we have a plant cell. In a plant cell, there is a cell wall, and in animal cell, the cell wall is absent.
In plant cell, there are chloroplasts. In animal cells, the chloroplasts are absent. In plant cells, there's a large central vacuole in the center, whereas in animal cells, there are numerous small vacuoles, which are known as lysosomes. In cytoplasm of a plant cell, it's reduced to a thin lining. ठीक है? Thin lining means that it's only at the periphery of the plant cell. ठीक है, उसकी सिर्फ साइड्स पे प्रेजेंट है. पेरिफेरी का मतलब है उसकी साइड्स पे प्रेजेंट है. अस्सलाम वालेकुम मैम. Whereas in the cytoplasm in an animal cell, the cytoplasm fills the entire cell, right? Then in a plant cell, there is a presence of starch grains, whereas in an animal cell, there is an absence of starch grains. What are starch grains called? What is another name of starch grains, girls? Bisma, Ma'am, aminoclast. amyloplast. Yes. And in a plant cell, there is an absence of lysosomes. All right. Lysosomes are not present. What is the function of a lysosome? Bisma, Ma'am, they are the garbage collectors. they are the garbage collectors. Then what does collect the garbage in plant cell? Ma'am, lysosomes are also present in some plants. In some plants. But what about the other ones? What will collect the garbage in other ones where lysosomes are absent? Ma'am, large central vacuole. Okay, yes. All right. So again, we have a question, which cell structures are found in plant cells and animal cells? And animal cells both, basically. Means which one of these are present in both animal cells and plant cells? G. What will be the answer? Ma'am, C. No, 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 ma'am. B. B. Yes. Cell membrane and nucleus will be present in animal cells as well as plant cells. Right. So the answer is B. So here there is a little bit of extra information on the different parts of a cell. I'm not going to go deeper into that. I'll just give you now an introduction of these types of cells. Now, there are up till now जो हमने cells पढ़े हैं, they were simple cells. ठीक है, simple cells थे, specialized cells नहीं थे. अब नॉर्मली होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी में भी प्लांट्स में भी ये जो सिंपल सेल्स होते हैं मतलब जितना सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ये वो सेल होता है जब सेल नया नया बनता है वो सेल का स्ट्रक्चर था लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाते हैं सेल्स then they are specified and when they're specified to perform different functions then वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को चेंज कर लेते हैं ठीक है अब वो चेंजेस क्या हैं इसी को ही स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं that the cells they modify themselves according to their
रिक्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी सेल्स विच हैव अडेप्टेड देमसेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, जिनके अंदर जिनका पहले स्ट्रक्चर वैसा ही था जैसा नॉर्मल एक एनिमल और प्लांट सेल का होता है, लेकिन आफ्टर व्हेन दे स्पेशलाइज themselves, देन देयर स्ट्रक्चर चेंज और ऑल्टर्ड, चेंज तो नहीं मैं कहूंगी, ऑल्टर हुआ वो। ठीक है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आई, जैसे कि स्पेशल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल। अब यहाँ पे ये रूट हेयर सेल है, द वेरी फर्स्ट वन। You can see that there is a root, there is a protrusion of the cell which is uh, popping out from one side of the cell. ठीक है, अब ये प्रोट्रूजन क्यों है? ये प्रोट्रूजन है एब्जॉर्प्शन के लिए, बिकॉज इट नीड्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स, बिकॉज इसका काम है ना रूट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन करनी। तो उसकी वजह से उसको ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है जब वो उसके हेयर लाइक एक्सटेंशंस बन जाती हैं। तो उन हेयर लाइक एक्सटेंशंस के अंदर थोड़ा थोड़ा उसकी उसका सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड होता है, सेल वॉल भी एक्सटेंड होती है। ठीक है, so there are it's the shape of a root hair cell is long and narrow, and it is in order to increase the surface area to volume ratio for efficient absorption of water and mineral salts. Then next type of specialized cells are red blood cells. G. Can anyone explain red blood cells to me? What is the difference between a red blood cell and a normal cell? Red blood Ma'am, cells don't have nucleus. All right, red blood cell doesn't have a nucleus. यहाँ लिखा हुआ है? Yes, लिखा हुआ भी है वैसे। Okay, and what else? Ishal was trying to say something. No, ma'am, she said. Hmm? No, ma'am. Okay, so right. Now, a red blood cell, it contains a pigment which is called hemoglobin. The basic function of red blood cell, अभी भी फिर हमें आगे जाना पड़ेगा. Red blood cells, they are flattened. They are uh, they are thin from the center and they are thick from their edges. Right? Again, this shape is to increase the surface area. और इसका जो सेंटर होता है, जब रेड ब्लड सेल मैच्योर होके ब्लड के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर से जितना भी मटेरियल होता है वो सारे इसके सेलुलर ऑर्गेनल्स खत्म हो जाते हैं, एंड इसके अंदर सिर्फ एक चीज रहती है, विच इज अ रेड पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। अदरवाइज इसमें विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अदरवाइज बाकी जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, and that's the reason that red blood cells do not have a very long life. ठीक है, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। दे विल लिव फॉर ओनली 1 month, 2 to 3 months। 2 to 3 months के बाद ये दोबारा बनते हैं और दोबारा आते हैं एंड चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, then we have xylem vessels. Xylem vessels are again types of specialized cells. हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में। They transport water and mineral salts. Their basic function is this. And क्या मॉडिफिकेशन होती है xylem vessel की? इधर है बनी हुई। These wooden vessels, they are xylem vessels. What They are is made up of tissue. They are made up of woods. Yeah, they are made up of thick wooden tissues type of, and they are hollow from inside. This is another modification. ये hollow क्यों होती हैं from inside?
So they can transport water to the leaves. Yes. So they can transport water to the leaves. Excellent. They are dead because there is no protoplasm because they need to transport the water to the leaves. That's the reason that they are like this. So you see that there are multiple there are multiple cells which are modified to perform their functions. For example, अब eye के जो cells होंगे, they are specialized to perform the functions of eye. जो जो हमारे टंग के सेल्स होंगे, जो इसके ऊपर हमारे टेस्ट बड्स के सेल्स है, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. जो हमारे स्टमक के सेल्स हैं, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टमक. So every cell is modified to perform its specific functions. It's specialized to perform its specific functions. ठीक है. इसी का मतलब होता है being cell being specialized. या इसको इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन. इट्स अ प्रोसेस वेयर सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है. एंड ये हमेशा स्पेशलाइजेशन कभी कभी ये बॉडी में भी होती है, और मेनली जो एरिया हमारी बॉडी का स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी में जहाँ स्पेशलाइजेशन होती है, दैट इज योर बोन्स. बिकॉज द ब्लड इज मेड इन द बोन्स. तो अगर sorry the the cells are produced inside the bones. तो अगर किसी सेल ने किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाना हो तो वो डिफरेंशिएट होके वहां से जाता है, तो बोन्स से. तो बेसिकली जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, मींस जो नॉर्मल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, वो प्रोड्यूस बोन के अंदर होता है. एंड देन जब उसकी मॉडिफिकेशन होती है तो वो बोन्स उसको मॉडिफाई करके उसकी स्पेसिफिक जगह के ऊपर भेजती है, जहाँ पे भी उसने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना उसके अकॉर्डिंग. ठीक है गर्ल्स. Yes, ma'am. ओके. All right. So we have time till 10 o'clock, right? Yes, ma'am. Okay, then it's just a little bit of it is left. Now, when multiple cells of same type or different types, it's not necessary कि एक ही तरह के cells हो. When multiple cells they combine and they group together and they carry out a specific function, that is known as a tissue. ठीक है. उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं. अब हमारे पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं. सिंपल टिश्यूज which are for example epithelial tissues, जैसे आपकी स्किन है, एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ बॉडी के ऊपर. इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज, जिससे आपके मसल्स बने हुए हैं. इसके अलावा और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी हैं, जैसे कि ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू. ठीक है. ब्लड एक ऑर्गन नहीं है, ब्लड एक फ्लूइड नहीं है, ब्लड एक टिश्यू है. ठीक है. ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू. So it's a complex tissue which contains several different types of cells. जब सेम टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इट्स अ सिंपल टिश्यू. व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. क्लियर. Now Yes, the ma'am. in blood we have white blood cells, we have platelets, we have red blood cells, and we have many other compounds. Compounds. Now these are different types of simple and complex tissues, connective tissues, epithelial tissues, muscle tissues, and nervous tissues. Then when the tissues they combine together, they form organs. Okay, and for example, your stomach, your liver, these are organs where different tissues are performing a specific function. Then when different organs
they work together for a special purpose. They make up an organ system. For example, the digestive system, for example, the respiratory system, for example, the nervous system. Okay, there are many systems in your body. Respiratory system भी है, digestive system भी है, nervous system, circulatory system, excretory system, immune system, and one by one we are going to study about each one of these. Yes. Any questions? And the same goes for plants. There are also tissues inside the plants. There are also organs inside the plants. वैसे plants के organs कौन से होते हैं? Main. कोई बता सकता है? Leaf. Yes. Leaves, flowers, roots, stems, these are the organs of a plant. And then tissues are, for example, xylem tissues, phloem tissues, cambium tissues, epidermal tissues. These are tissues inside the plant. Okay? G girls, is it clear? If anyone has a question, please, No, you ma'am. may ask. No, ma'am. Clear. Everything is clear. Okay.